Aapi Pravasi Bharatiya Global Health Summit curtain raiser. I would like to thank our chief guest, Dr. Sushi Singh, our guest of honor, Dr. Karthikeyan, and our guest, Dr. Neelam Mohan. And I know there are several guests, Dr. Maheshwari from AIMS, and all the Aapi leaders. And of course, the important person is incoming President, Dr. Anjana Samadar, for being here for this event. The 17th Annual Summit will take place in Delhi, January 2nd, 3rd, and 4th of 2024, followed by a scientific session in Mangalore, Manipal University on January 5th and 6th. During summit, we will bring together prominent members from healthcare sector, government officials and diplomats, researchers and representatives from private sectors. Dr. Samadar will talk about the summit more in detail. Now let's welcome our chief guest, Dr. Sushi Singh. I would like to I don't think I deserve to be the chief guest among this August gathering. They are the ones who are really working for the topic for which we have gathered today. But as I'm here, I think I would like to share some of my thoughts. So welcome to all the distinguished doctors, media personnel, and dignitaries gathered here today. I'm honored and inspired to be speaking with you for this very great and required topic. We all know it's a very required topic. But before we begin with, I would like to thank all the doctors profusely for their tremendous and selfless contribution during the COVID-19 pandemic. Thank you. As we emerge stronger and more grateful on the other side of the pandemic, I wanted to draw your attention to the topic of MMR, maternal mortality rate in India. And I don't think I should be bringing this topic to you because you all know about it. MMR in India remains very high at 113 per 1 lakh birth, and nearly double in Assam, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. I'm speaking about it because I have worked closely with women in these states for the last decade, supporting the government Beti Bachao Beti Padhao initiative and Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, which our Prime Minister has highlighted in his speech on episode of Man Ki Baat on 31st July 2016. So despite recent improvement in MMR India, we have a long way to go. And I deserve to say this, as I have been closely working with the women of villages in India. As a social change agent, I have seen villages 50 kilometers from the capital, the suburban areas in UP and Haryana, where women still face all kinds of social ills and tolerant about it. That's the main point. They die delivering 6 or 10 children in expectant of one male child. I don't think you all will not agree with it. But their sacrifices remain unnoticed. Rather, a new bride takes over the place to give them the heir of the family. So my question is that, do we need to raise the importance of the topic today anymore? Are we all not convinced that it is a high time that the global health systems take speedy actions towards saving the mother, saving the community and saving the nation? Yet, there are various ifs and buts. Regarding role of bureaucracy, health systems, individual awareness, empathy for women and so on. I urge today the Indian Association of Doctors of Indian Origin here to come forward and collaborate not only with the government but with the corporate sector, media and civil societies in this regard. The brighter side is that India has registered the overall decline in maternal mortality rate of 70% between 1990 and 2015 to a global decline to 44%. And I'm so excited with the presence of all of you that the day is not far when preventable MMR is zero in India, probably. I use the word probably because here I would like to take your permission, if you all are comfortable in Hindi, I would like to just share 2 of my personal experiences in the whole episode in the last 2 decades which I have gathered. 2013 से 2015-16 तक मैंने
उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में जहां काम किया, हमारे स्टूडेंट्स, I had been leading a few organizations where I was giving them project to bring individual social responsibility for them. But when we touched the villages, हमने गांव में जब औरतों को, अपने बच्चों को आगे पढ़ाने की बात की, social stigma was that much that holistic education, child के holistic education के लिए जो classes लगाए गए, जिसमें name one thing which was not there, yoga, computers, dance, self-defense, and of course English and all classes. This ratio, I'm just talking about 50 kilometers. 50 kilometers is nothing from Delhi. So जो ratio था boys versus girls का, class up to 5, it was 5 to 10, means 5 girls over 10 boys. It was 3 to 10 in class 8th onward, and in 10th 0 to 10. And the reason was, we found out, we researched, we talked, we brought the women forward. And believe me, 200 औरतों की गैदरिंग को जब मैंने बुलाकर समझाने की कोशिश की, आपको लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, पढ़ाते क्यों नहीं हैं, उनका एक ही चीज़ कहना था कि हम मैडम 10-10 बच्चे पैदा करते हैं कि एक लड़का हो जाए, अब जो लड़का पैदा हुआ हमारा, उसको कौन देखेगा? बच्चियां ही तो संभालेंगी घर, आगे चल के पढ़ के करना क्या है? पढ़ के तो शादी करनी है, शादी करके फिर बच्चे ही तो करने हैं. This is the social, I think, till today stigma that we have, and I have suffered it personally, so I can share it with you. I, at the age of 17, after my 12th in 1983, cleared medical in first attempt, but I'm not a medical doctor. Why? Because I belong to a royal family from Rajasthan where girls are not supposed to work. So I was not allowed to join medical. I was forced to marry with a so-called high-fi senior bureaucrat so that their duty is done. I persuaded my husband to study further, and I'm here after doing my PhD and blah blah. I've done my course from Harvard and etc. But the thing is that how many of us can do it? So maternal mortality rate is in India is not declining due to, or it cannot decline to 0, not because that you people cannot provide the facilities, government cannot provide the facilities, and the health system cannot improve. It can reach up to the doorstep. What about the mentality in women and in men? Because हमने औरतों को पढ़ाया, उन्हीं औरतों को पढ़ाया, उनको इतना सक्षम बनाया कि वो कुछ अपनी रोजगार पैदा कर सकें, और जब उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस with the effort of 5 years, उसमें से कई औरतों ने अपने बच्चे स्कूल भेजना शुरू किए. उसमें से हमने कुछ out of this 200 population of women, हम केवल 45 औरतों को पढ़ा पाए, और उन औरतों में से 10 औरतों के बच्चे रेगुलर स्कूल आते रहे. उन 10 बच्चों में से मैंने 3 लड़कियों को ग्रेजुएशन विद LLB कराया. अब उनका सवाल ये है, मैडम आपने पढ़ा तो दिया, अब इनसे शादी कौन करेगा, और फिर इनको जॉब कौन देगा? जॉब तो मिलती नहीं है, और अल्टीमेटली तो फिर शादी करके फिर बच्चे ही तो पैदा करने हैं. अब इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास भी नहीं था. मुझे अब इधर 2022 में मौका मिला कुछ सबर्बन एरियाज में, सफदरजंग के स्लम्स में काम करने का. वहाँ जो बच्चे लेकर आ रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी उम्र सुनिए, 20 साल की लड़की, 3 बच्चे और चौथा पेट में. तो मैंने कहा तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, और बहुत पेल सी, बहुत फ्रेजाइल सी. मैंने कहा क्यों, चौथा बच्चा क्यों? लड़का तो हो गया. क्योंकि मैडम सास का कहना है 2 लड़के तो होने ही चाहिए, चौथे में बेशक जान चली जाए कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी. ये दिल्ली की बात कर रही हूं मैं. इसका क्या करेंगे आप? इसके लिए आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से क्या संबंध है हमारा, आप समझ सकते हैं. इट्स क्लोजली रिलेटेड. Topic to my heart actually. I'm blessed with 2 daughters, and I have given them wings to fly. They are in America, they have toppers, they have done their things from Princeton and Harvard, and they are not marrying, and people are in my family, they are pressing down, why don't they get married? I said because it's their life. But last but not the least, let me take this opportunity to thank you all for supporting such a wonderful
initiative and concept with my best and warm wishes for a happy, bright and blissful year ahead. I take your leave. Thank you very much. It's an honor to be with all of you this morning. I've been traveling last 6 weeks, mainly to be away from pollution and cold Delhi. And I am here. Last night I came back because of summons from Dr. Udaya Shivangi, who had the privilege of knowing he and her husband, last 40 years at least. She is a student in medical college in Belgaum. And tomorrow I am off to Ahmedabad. I came here to be with all of you this morning, and turned out to be one of the coldest days, coldest nights in Delhi. Anyhow, we all know you're living proof of the Vedic slogan, Vasudhaiva Kutumbakam. Wherever you are, we belong to the same family. Planet is one, and we are all citizens. So either everybody is happy or nobody is happy. As the eminent doctor said earlier, so much of suffering in parts of not only India, every part, even America, I know there is so much of poverty, deprivation, exploitation, suffering. So the duty of every one of us who are privileged to have a better quality of life is to take care of those who are less privileged than us. So in management schools, when I go for convocation, I tell them that not everybody is privileged like you people, but now you've got a degree, you've got a job on hand. The least we should do is to take care of one person less fortunate than us. You people, that is the American doctors of Indian origin, or you can say whatever it is, you have gone for higher studies, achieved distinction, make a huge contribution to the health of American citizens. I believe 1 in 7 doctors in America are of Indian origin, and they are not just doctors, they are eminent people I know very well. So my friends in the American embassy, when they say they come for, I don't want to mention the hospital, I said, why are you not going? You are entitled to go back to America. They said, even when we go there, we are treated again by Americans, Indians only, so why not be here? So that much of reputation, expertise you have gained, we are proud of all of you. Yes, we have a lot of problems here, and it is very kind of you to have thought of doing something to some sections of the Indian population. You are in Visakhapatnam last week, I think, and the same day I was also there, but I didn't know you were there. I decided to spend the first of New Year Day with the tribals living in the high mountains there. 4 hours of drive from Visakhapatnam to Araku Valley. 2 hours I spent with that community, ancient tribal community. Their lives have been transformed I'm supporting a spiritual movement called, meditation. I call it meditation is miraculous. It is proved also. Previous week I was in down south, called Amar Seva Sangam, near the Western Ghats there. 2 gentlemen got into accidents, highly qualified, so nothing below the neck works. They speak beautifully. That's about 3 decades back. They said, we will serve the less fortunate like us, born with problems, mental, physical, or accidents and all that. So they started this movement called Amar Seva Sangam, helping people, hundreds and thousands of people, rehabilitate them, rejuvenate them, and make them fit for normal life. Very dedicated people there. And the chief financial officer was Rajeshwaran. He said, at the age of 20,
He went with a car accident in Salem, lost all senses. Somebody mentioned about it, he went to this small village people. There, one of the two mentors is Shankar Raman, a chartered accountant, qualified. They made him all right, but he had to be on a wheelchair. But he said, I will make you a chartered accountant, and he is a qualified chartered accountant. He is the chief financial officer of the moment. There are 300 inpatients there, 600 volunteers are paid. An amazing service they are doing. And I know some from Scandinavia, Germany, they come to stay with them, see how they are able to do the dedicated service. Amazing. Thank you. I couldn't believe it. Now she's so dynamic along with Udaya, the leader. Yes. Thank you so much. Thank you. Carrying on his achievements. And very well associated with the Agapio, always getting a lot of awards, helping people. Yes, ma'am. Ma'am is sitting. Ma'am, yes. Sir? Passionate speech. My pleasure. Very passionate speech. It will remain in my mind for a long time. Sir, take your side. Yes. Here. They are future pillars for Aapi. Sir, this side. Thank you. Yes, sir. American Association of Physicians of Indian Origin represents about 120,000 Indian physicians in the United States. Medical students, fellows and residents. We have for the last 17 years, we have held a Global Health Summit, and we have been working along with the Indian government and the US government to help with the improvement of health in both in our motherland, India. As we all know, good health and good sense are two of life's greatest blessings. One of our missions is to inform and empower women to take responsibility for their health, understand their health options, and identify services that best help them to prevent and reduce poor health. If women are healthy, they will be healthy mothers. We heard Dr. Sushi Singh talk about maternal mortality. Women's health needs to be addressed not just during pregnancy, but at all times. Aapi's vision is to promote evidence-based community interventions to promote wellness, both physical and mental health, environmental health literacy, and environmental public health. Also, we would like to partner with technology, corporate sector, the government to advance health equity by improving healthcare access and quality in India. Aapi has already been working in the underserved community in the villages. In fact, the last year there has been an Adopt a Village program which Aapi has led, and they have already done about 66 villages which has been sponsored, and they have gone to these villages to
take care and to raise awareness of preventative health care. We would like to focus on women health, including cardiovascular, autoimmune diseases, breast cancer, cervical cancer, and not the least, mental stress and depression, which has not been addressed a lot and which is not really expressed, and we want to bring that to the forefront. Educating women and promoting preventative medicine in women and in communities and countries, and ultimately the world, are only as strong as the health of their women. So I would like to invite all of you to come next year and be together at the Global Health Summit in Delhi at the Taj Palace on January 2nd, 3rd and 4th to celebrate the event. But we would like to start working on the projects right away, and we would like to know, and we have been working with the doctors in India to find out what we can do to help with reaching the underserved area. So I would now like the press to ask questions and also come during our Global Health Summit and be there so we can work in an intertwined manner. So thank you once again, all of you. ठीक है ना? मेरा नाम है डॉक्टर अमित चक्रवर्ती, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ वहाँ पर। लेकिन हमारा जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट में हम लोगों ने काफ़ी एडवांसेस किए हैं। एक तो है वैक्सीन, जो है आपको पता है प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, राइट? तो वैक्सीन जो है बहुत ही एडवांस्ड। तो पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन कोरोना वायरस के अगेंस्ट में निकली है, इट हैज बीन ब्रॉट आउट इन अ रिकॉर्ड पेस। इतनी जल्दी कभी किसी आज हिस्ट्री में इतनी जल्दी 12 मंथ्स के अंदर वैक्सीन टेस्ट होकर बाहर निकल गई, और वैक्सीन के जरिए से हम लोगों का कोरोना जो है हम थोड़ा सा वो बहुत कम हो गया है। तो वैक्सीन जो नहीं लेते हैं और वैक्सीन जो के खिलाफ हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन जो है आपको बचा सकती है। ये जो वेरिएंट्स भी होता है उसको नॉट ओनली आपको बचाती है, वो कम भी कर देता है, यानी कि आपका सिवियरिटी ऑफ इलनेस। दूसरी बात ये है कि और भी दवाइयाँ अभी भी हैं। फाइजर एक दवाई निकाला है, व्हाट्स द नेम ऑफ द ड्रग फॉर कोरोना। तो वी हैव फाउंड मेडिसिन ऑल्सो, जो दवाइयाँ लेने से कोरोना का सिम्टम कम हो जाता है। जैसे अपना कॉमन फ्लू के लिए हम लोग कुछ टैमी फ्लू जैसा दवाइयाँ हैं जो कि सीवियरिटी कम करवा देते हैं, अब इसमें भी दवाएं निकल चुकी हैं। तो गलतफहमी ये है कि दवाएं नहीं निकली है। वैक्सीन तो एक बड़ा सा एडवांस है और इसमें दवाइयाँ भी निकल चुकी हैं। अभी जो है कोरोना, आपको ये तय करके चलना होगा आगे से। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन ये बात है कि आप वैक्सीन लेने से एक तो है कि वैक्सीन और उसको बूस्टर भी लेना चाहिए, ठीक है ना? और बूस्टर जो है अभी के बाईवैलेंट बूस्टर मिल रहा है, यानी कि 2 किस्म के कोरोना के अगेंस्ट में। वैक्सीन अगर लें तो आपका चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि आपको कोरोना लगेगा। ये नहीं कि 100%। आप फ्लू वैक्सीन लेते हैं, आपको फ्लू भी फिर से हो सकता है, लेकिन चांसेस जो है आपका अगर 100% से आपका चांसेस हो जाता है 20%, ठीक है ना? और दूसरी बात यह है कि अगर आप ले वैक्सीन, आपका सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो कम हो जाता है। COVID, we did a lot of work back in India here, even though we were extremely busy back in USA. So we, within a very short span, we collected about $5 million, and we sent hundreds of ventilators here, thousands of oxygen generators we sent here. And we had a lot of other things we did, to vaccinations, so many things we did work here. So it was, our question directly is, adaptive village is a different thing, ma'am. So the thing is working from there, working directly to the villages, but our products, our help reached the small corners of the India, every small corner. It did reach. I know that, I was at the committee also. So the small villages, I mean, at least where they have ICUs and all, small like moderate towns, they have received 2-3 ventilators, and which helped several patients. They have really saved so many patients there.
विलेज अडॉप्टिंग और कोरोना ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं। अडॉप्टिंग अ विलेज हम लोग करते हैं, उनको स्वच्छ पानी और सारे जो फैसिलिटीज देने के लिए स्क्रीनिंग फॉर डिफरेंट डिजीजेस। जब कोरोना के टाइम में आबी ने हम लोगों ने क्या किया, इन्होंने बताया कि $5.5 मिलियन, जो कि no more than that, 40 crores I calculated it, 40 crores हमको मिले 2 महीने के अंदर हम लोग, और उसी के जरिए हम लोगों ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द कंट्री, हम लोगों ने वेंटिलेटर भेजा, हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया ताकि इन फ्यूचर उनको कभी ऑक्सीजन कमी ना पड़े। में है ये जो आप पूछ रहे, बिल्कुल आप api.usa.org जाकर वहां पर सारे आपको पता चल जाएगा कहाँ हमारा वेंटिलेटर गया, हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर गया, और हमारे कहाँ पर हम लोगों ने प्लान बनाया। प्लीज गो टू आवर वेबसाइट एंड यू कैन इजीली। Doctors, after doing their regular work, came by and saw patients from 7 o'clock in the evening until 2 o'clock in the morning to counsel by telehealth. Aapi did with the 3 doctors associations we did it. आपी आता है इंडिया में एक मिशन लेके। इस साल का मिशन है, अगले साल का क्या माँ बचाओ मैटरनिटी। सो हम लोग सबसे पहले टीबी किया, उसके बाद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी किया। तो हर साल जो लीडरशिप आती है एक मिशन लेके आती है, और वो हम लोग अकम्प्लिश करते हैं और उसको जारी रखते हैं। This question, but we'll stop all the corona question. क्योंकि ये आप ही का वो है, ये जो आप कह रहे हैं ये infectious diseases conference में होना चाहिए। खैर ये जो ओमिक्रॉन और डेल्टा ये वेरिएंट्स हैं, लेकिन वैक्सीन से फायदा ये होता है कि ये वैक्सीन जो है वो मल्टीफैसेटेड वैक्सीन है, यानी कि ओमिक्रॉन को समझ लो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन कैप्सुलर प्रोटीन के अगेंस्ट में है, तो विरुलिटी कम कर देता है। तो आप अगर वैक्सीन लो, बाइवैलेंट वैक्सीन लो, आपको अगर वायरस भी हो, आपका सीवियरिटी जो है ऑफ डिजीज कम हो जाता है। Oh, that's a good question. This is we just talking we just met our health ministers, and we were talking about that too, and we talked impressed about this. So this is the corona is very sensational topic, but the main killers of India is hypertension and diabetes, which we all have to really stress on that. As a media, we request you to run more programs to inform the patient, educate the patients, because they are really big killers of because even America also, we do stress on hypertension, diabetes as a primary care. We do stress, a lot of screenings happens and regular follow-up, which does not happen in India. That's very important, education to the patients regarding these 2 or 3 hypertension, diabetes and cholesterol problems are main problems it's a big burden for the whole country, because for example, it's not uncontrolled hypertension, diabetes. If it is somebody like 35-year-old, 40-year-old, because they start very early, 30, nowadays even earlier, 17, 18 kids also. So they get into like some problem like kidney failure, damage, and they go into dialysis, they can, because of not control all these problems, such a burden to the whole country and family also. So that is very important. So we talked to several things. I mean, of course, it takes some time, but the government has to, of course, the more important thing what to say is the government policies might not work all the way. But as a media, I would recommend you to do more education to the patients, bring more programs, and more the educational write-ups, whatever you do, that's very important for the population. Doctors as well as US doctors had speakers so that we learn from them and they learn from us, so that we develop more schemes, more protocols, so that we learn from each other. Now, India is a diabetic capital, especially South India is a diabetic capital. Every 3rd person in India has diabetes, whether we like it or not, and the same thing goes to the Indians anywhere else. So also diabetes and hypertension, Dr. Roberto said, are risk factors and the silent killers. I'm a cardiologist. I see a lot of heart disease in Asians, South Asians especially. Just give you one example. South Asia contributes to 24% of the population of the world, but we contribute to 60% of the heart disease in the world. I'm talking about South Asians anywhere. So if you're only 24% of the world population, but our heart disease is 60%, that's 2 to 3 times more.
and 3 to 4 times more heart disease in South Asians. So we need to educate people what the risk factors are, what we can do about it, so that we can prevent these sudden deaths and we can prevent the heart disease burden on the population, and then which leads to congestive heart failure. So I think in India, when I was growing up, we were always being reactive. So when you get the disease, when you get the fever, then you go to the doctor, because we didn't have that many doctors at the time. But I think we need to change that philosophy to be preventative. Instead of being reactive, we need to be proactive. Get the regular physicals done every year, so that we can see what the diabetes is happening or not, how the hypertension is. Because hypertension, diabetes, you may not know what's going on, but 10 years down the road, your kidneys may be shutting down, you may get a stroke, may get a heart disease. So I think we need to go into that preventative mode, so that India is growing, changing a lot. I think you talked about the policies. I think what I know from India when I left in 1993 to now, it has a tremendous progress. So whatever happens in West, it comes to India pretty soon, but it may not be reaching all the parts of the rural India. I think that's what we were learning from Aapi point of view, going through the adoptive village kind of a program, so that we can screen the people for hypertension, diabetes, so that we can educate them, and then we change the risk factor modifications, and then if there is a problem, refer them to the doctor, so that we can take care of them to prevent the complications in the. Aware of a lot of programs in India, so it's very hard us to comment on this. What you ask in continuation of your question, what Aapi can do that. Aapi has been doing several things regarding even hypertension, diabetes also. We're running several seminars. While we're doing summit here, we do run seminars. There are a lot of physicians, they come learn from them. We learn from them too, some of things. And also we do online courses, online CMEs and all those things for the physicians who are interested. So, and also, what else we can offer? Okay, for you, in front of you, we can offer. We did the same thing. Some of the media, they came actually, they want us to participate in that. If any of the media here want to contact Aapi, and we will love to have some seminars for the general population. We want to do that. Also through its branch called Aapi Charitable Foundation, runs free clinics, several of them around the country, either partially subsidized or in collaboration with the local people. And the information of that also can be found on our website. So ये हम लोग ने we have been doing this for 20-25 years. कि हमारा एक site वो है charitable foundation. To prevent diseases, important diseases like diabetes, heart problem, and the media can reach it to the people, to the villages, to the rural people, and we would like to work in partnership with them to address these issues. वहाँ तक हमारे जीन्स थे, वो जीन्स बचाने के लिए बने थे कि जितना भी खाना बच रहा है उसको सेव करें, लेकिन जब वो मैल न्यूट्रिशन कम हो गया, वो जीन्स की विजरल में बचाने की आदत हो गई, इसीलिए वो लिवर में चले जाता है, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी. तो जैसा उन्होंने बताया कि 22% में 60%, ये आप लोग सब मानेंगे कि क्या बीमारियां इंडिया में इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं. आंसर जो मैडम ने कहा, इग्नोरेंस. क्या एक विमेन को मालूम है कि अपने बच्चे को क्या खाना दे? बिल्कुल नहीं. मैं हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स की मेदांता में हरियाणा में, वो 1 लीटर दूध पिलाते अपने बच्चे को. क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है. तो उन्हें मालूम ही नहीं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी. ये सारी कमियां हमारे बच्चों में इतनी ज़्यादा है. तो ये चीज़ जो ये बोल रही हैं प्रिवेंशन कि आप हर एक बार जाएं. इग्नोरेंस तो जो 75 ईयर्स जब हुआ था, मेरा आर्टिकल आया है इंडिया टुडे में और अभी आउटलुक में, जिसमें मैंने यही लिखा है, द वे यू कैन गेट फ्रीडम फ्रॉम हेल्थ के लिए इज फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस इज द वे टू हेल्दी इंडिया. तो ये आपको सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं कि कैसे आप लोग के पास सब है, लेकिन आप हमारे अंदर जनरली इंडियंस में एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं है. कितनों ने थैंक यू बोला. आज एक मरीज आया यूएसए से, वो अपने बच्चे को डायरिया से सीवियर एडमिट किया और रात में एडमिट किया 1 बजे और सुबह हमने ठीक किया. उसका एक चीज था, थैंक यू सो मच आपने बच्चे को किया. दैट इज कॉल्ड अ मिरेकल वर्ड
ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको यू वांट हैप्पीनेस से बढ़कर कोई भी आपको चीज़ हेल्थ में नहीं मिल सकती। फर्स्ट लर्न टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस आता है ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू। मैं आप सबके बिहाफ पर आपकी को एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड कि इनको क्या जरूरत है यहाँ, क्या जरूरत है। यू डोंट नीड टू बी। इंडिया जो कर रही है काम जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई का, वो कैंसर का जो मेडिसिन रहता है उसका पैटेंट रहता है। सो इन इनिशियल फ्यू इयर्स द कॉस्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट डाउन बिकॉज दैट्स हाउ फार्मा कंपनीज पैटेंट है। क्योंकि अगर नई दवा बनाने के लिए उसका रिसर्च का खर्चा बहुत आता है। बट इफ यू सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक ओनली अनाउंस दैट इंडिया इज बिकमिंग द रिसर्च हब फॉर द वर्ल्ड टू डेवलप द न्यू मेडिसिन। Everybody should come to India and develop new drugs, and that is the way we can bring the cost down by making the products in India. As Prime Minister Modi's appeals, make in India, it has not happened as robustly as in other sectors as in pharmaceuticals. Our pharmaceutical industry is very strong, but most of it is generic. The original products come from multinational companies, and we cannot control them from here, sir. आपको 5-7 साल उसको टेस्ट रीटेस्ट फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 ये करके निकालना पड़ता है। और वो जो ड्रग कंपनीज हैं उनको दे हैव टू गेट देयर मनी बैक जो कि स्पेंड किए हैं। ये जो डॉक्टर वैली ने कहा कि आफ्टर कुछ साल जब पैटेंट चला जाता है तब जेनेरिक बन जाती है। लेकिन उससे पहले जो आप हमको पूछ रहे हैं फिजिशियंस के उसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम फिजिशियंस। वैक्सीन खरीदते थे तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट जब वो इंडिया में बन गया तो वी बिकम द सप्लायर फॉर द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट नीड्स टू हैपन इन फार्मा इंडस्ट्री, इट विल हैपन। आपने पूछा था कि प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ के बारे में क्या काम किया है। वी आर एब्सोल्युटली प्राउड व्हाट इंडिया हैज डन इन लास्ट 8 इयर्स। प्रधानमंत्री की जो जन कल्याण हेल्थ योजना है, आयुष्मान भारत योजना जो है, इट इज द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन द वर्ल्ड। इस गवर्नमेंट व्हिच इज मेडिकेयर एंड प्राइवेट as well as there are some not-for-profit organizations who also run the health insurance plans. In that, the government runs Medicare as on the same format Ayushman Bharat is running now in India. While private insurance plan जो है, यहाँ की जो private insurance plan है वो exact. There are a lot of companies, so there is not much difference. India is following the same format as what is happening in America. जनवरी के महीने में टू डू ग्लोबल हेल्थ समिट, ये 17 साल से चला आ रहा है। इसका मिशन यही है कि हम लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, वी हैव टू गिव बैक टू द मदर इंडिया। हर साल हम लोग आते हैं और एक एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग करते हैं। अगले साल का टॉपिक है माँ बचाओ मैटरनल, सो वही मिशन से हम लोग आए हैं। तो हम लोग के पास 1 साल है इसके लिए काम करना। तो मैं चाहता हूँ कि प्रेस इसको ठीक से बढ़ावा दे और हम लोग इसका सक्सेसफुल समिट, इसका जो कंक्लूजन है ये लाभदायक हो। Help of media to help us educate and also help us raise awareness and preventative, because unless we can educate the mother, there is very little hope in healthcare in the country. So that is one of our main primary goals. We are going to plan for especially women, mother and the child health. It could be telemedicine, it could be in person, whatever we could do. We can teach CPR, we can teach how to give a shock to the heart, like an AED program, and we planned so many. Even because of corona, people suffering from mental health and they're committing suicide. So we are fundraising, helping them how to avoid suicidal committing. Even physicians are doing. So we are helping. We have various projects and we are planning and we want your help so that we can work hand in hand. इस वाला समिट जो इन्होंने कहा, बेसिकली हमारा लीडर भी है वुमेन, हमारा ग्लोबल समिट का ऑल्सो चेयर ऑल्सो वुमेन। हम लोग माँ बचाओ माँ, दिस इज द थीम हम लोगों ने लिया। ये डिफरेंट होगा और डिफरेंट ये भी होगा कि हम लोग हर साल हम वी लर्न अ डिफरेंट थिंग। हम लोग टेक दैट एक्सपीरियंस और दूसरे साल विल मेक इट मच बेटर। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक और चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग को पता है कि EMT यानी कि जो एम्बुलेंस में जो पहले आपको लेकर एम्बुलेंस
और डॉक्टर हॉस्पिटल तक जाता है उनको कैसा तैयारी करें, उनको कैसा एजुकेट करें, क्योंकि दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डॉक्टर तक पहुंचने के टाइम में अगर उनको शॉक न दो, एड मत दो, आईवी फ्लूइड मत चलाओ, ये सब करने के, ये जो घर से जो है डॉक्टर खाने तक वो जो EMT उसका ट्रेनिंग, उसका टेक्नीशियन ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट। In USA as well as in India is working very hard to make that summit very successful, and the focus of the summit is going to be, as we said, Maa Bachao or Beti Bachao, and with that focus is there. At the same time, there are multiple more activities will be planned. There will be continuing medical education activities, there will be educational seminars, there will be awareness programs. We also do what is called anti-obesity programs. We also run what is called as we are partnering with the health ministry to create the emergency medicine department in each hospital. Because as you know, in India there is a CMO, but there is no emergency medical department. So that will be developed, and the residency program in each medical school is being developed as we speak now. The next project is going to be just one thing: family medicine is also being developed. That's protocols in US. So by using the protocols, we can make aware of what is going on and make this successful GHS next year. So that we can start the programs and establish with them whatever things, all the programs we're doing it now. We are working with major hospitals. तो ऐसा नहीं है कि एक समिट में ही आप जो टॉपिक लाते हैं उसी पर आप काम करते हैं। हमारी कंटिन्यूटी ऑफ केयर है, जैसे कि हम पिछले 10 साल से एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। ट्रॉमा पे किया था हमने, ट्यूबरकुलोसिस पे किया था हमने, तो उसके ऊपर भी हम कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग टर्म। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि अभी तक क्या हुआ है और आगे हमें उससे क्या करना है। The largest ambulance service, emergency research institute, is being operated in India. We are running 15,000 ambulances. Very good friend of mine. I called her last night. She said, "Morning immediately." नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच नीलम मोहन जी हैं। यहाँ पर आपी प्रवासी ग्लोबल समिट चल रहा है दिल्ली में। वहाँ पर मैडम ने शिरकत दी है, बहुत अच्छी बातें मैडम ने बताई। और यहाँ पर मदर बचाओ, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। यहाँ पर अमेरिका का एक जो समिट चल रहा है उसमें बताया कि माँ को बचाओ। तो मैम जी, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं उन माँओं के लिए? देखिए, ऐसे है कि हम सब जानते हैं अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो वहाँ की नारी को आगे बढ़ाना है। बिकॉज जब तक नारी का एजुकेशन नहीं होगा, वो अपने बच्चों को उस तरीके से कैसे पढ़ाए, कैसे उनकी हेल्थ का ध्यान रखे, ये सब चीज़ों की कमी आ जाती है। और हमारे देश में अभी सिर्फ मैटरनल मोर्टेलिटी की बात नहीं होती है कि जो माहें डेथ हो जाती है जिनकी बच्चा पैदा करने के गर्भवती के समय पे, उनसे अधिक और भी हैं। उन्हें एक तरीके से अपने आप से केयर करना नहीं सिखाया गया। बिकॉज शुरू से ये है कि वो त्याग दे, दूसरों के लिए करे, अपनी हेल्थ का नहीं दे। हर फैमिली में मदर होती है जो बच्चों का सोच रही है, हस्बैंड का सोच रही है, पेरेंट्स का सोच रही है, इन लॉज का सोच रही है। उसका कौन सोच रहा है कि क्या वो सही टाइम पे खा रही है, क्या उसकी हेल्थ ठीक है, क्या उसको प्रिवेंशन है, कैसे ब्रेस्ट कैंसर से बचाएं, कैसे सर्वाइकल कैंसर, कैसे उसकी हेल्थ का ध्यान रखें। तो ये सारी बातों अब अवेयरनेस करनी चाहिए। बिकॉज जो भी मुल्क अगर आगे बढ़ा है उसमें नारी का जब तक आगे वो नहीं बढ़ेगी, वो मुल्क आगे नहीं जाएगा। जैसे देश में ही आप डिफरेंट स्टेट्स ले लो, केरला में सबसे अधिक एजुकेशन है, विमेन एजुकेशन होने के कारण वहाँ पर हेल्थ सबसे हाईएस्ट है। तो जब आप नारी का ध्यान रखोगे, माँ का ध्यान रखोगे, एक औरत का ध्यान रखोगे, तो वो अपने आप ही सारा देश का कल्याण होगा। बिकॉज उसके थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एवरीथिंग से वो सारे परिवार का अपने साथ ध्यान रखें। आज हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव काल।
तो आज 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, फिर भी अभी माँ की अगर ऐसी स्थिति है, बेटियों की ऐसी स्थिति है, जैसे अभी आपने देखा कि बेटी के 32 टुकड़े हुए, एक बेटी को जो है कई किलोमीटर जो है घसीटा गया, उसकी मौत हो गई, और एक बच्ची को भी चाकू मारा है यहाँ पर दिल्ली में। क्या मैसेज है राष्ट्र के लिए, सरकार के लिए, ताकि बेटी को बचाया जा सके? आई थिंक कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज क्लाइम्ड वन स्टेप एट अ टाइम। तो अभी पूरे दुनिया में जिस तरीके से इंडिया की प्रोग्रेशन हो रही है, सारी दुनिया इंडिया को इस तरीके से देख रही है, क्योंकि चाहे वो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो अभी कोरोना के टाइम में हमने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से हमने हेल्थ को डील किया, किस तरीके से हमने पहली वैक्सीन इतनी बढ़िया तरीके से सस्ती बना, सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं पूरी दुनिया को भी उसको प्रोवाइड करने सके। तो ये पोटेंशियल है इंडिया में। अब टाइम है कि हमें अपनी सेल्फिशनेस से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। जो ये ईगो है, एक मैन की ईगो है, वो ईगो कहीं ना कहीं एक औरत को अपने इक्वलेंट नहीं समझना चाहती है। ये सारी कम्युनिटीज़ में काफ़ी ठूस के बराबर है, वो औरत को अपने बराबर नहीं समझते हैं। और सैडली औरत भी दूसरी औरत का साथ नहीं देती है। जैसे अगर एक सास ले लें, वो अगर नहीं अपने बहू का साथ दे या उनका, तो कहीं ना कहीं मेरा एक मैसेज सबके लिए है, सब इंडियंस, चाहे वो मेन है या विमेन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विमेन को मतलब किसी भी देश को उड़ना है। क्या एक पर से आप उड़ पाएंगे? आपको उड़ने के लिए 2 पर चाहिए। तो जो 2 विंग्स हैं, वो एक औरत और एक आदमी, आपके 2 विंग्स हैं। और कहते हैं कि घर से शुरुआत करो। आप अपने घर से ही, अपने घर में अपनी बहन और माँ का और सबका जब आप इज्जत करेंगे, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, इन लॉज, वहीं से इस तरीके से जो मैसेज है, जो एजुकेशन है, दैट इज़ वाई मैंने आपको शुरू में कहा विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एजुकेशन से वो अपने बच्चों को, जो लड़के हैं, उनको ये ज्ञान बांट पाएगी कि आपको किस तरीके से औरत की इज्जत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत इज्जत धन्यवाद। आपने इस बात कही है, बहुत अच्छा है। हमें सभी हिंदुस्तानियों को जो मैम ने मैसेज दिया है, सभी बच्चियों को, सभी पेरेंट्स को समझना होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।